आशिकी वो अनु अग्रवाल, अ सेक्स बॉम्ब। मुझे आज तक आशिकी के पूरे पैसे नहीं मिले। मेरे को कितने लोगों ने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद कर दिए, मुझे पीजी नहीं मिलता था। आई वॉज डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरे यहाँ, मेरे शक्ल पे सिर्फ यहाँ से स्कल फ्रैक्चर विच ब्लेड, आई हैड अ ब्रेन ब्लीड, आई हैड नो कम्युनिकेशन, आई हैड नो लैंग्वेज, आई डिड नॉट नो माई पेरेंट्स, आई डिड नॉट नो मी। आई एम नॉट मैरिड. I had chosen to be not married. That time it was ruled by people like Dawood Ibrahim. Don't you dare come near me. And nobody did. कहाँ नहीं है कास्टिंग काउच? बैंक में कास्टिंग काउच नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप यार? तो उसमें अमिताभ बच्चन भी थे और मैं भी थी, तो वो थोड़ा लेट आए, तो उन्होंने आते ही मुझसे सबसे पहले कहा, I'm so sorry. Shahrukh is my neighbor. You know, I see that and I just. आशिकी 2 have you seen? कैसे लगा आपको? Hello, this is Roshmila Bhattacharya and in another episode of बातों बातों में हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें देखने के लिए हम तरस गए थे, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई, वो रिलीज होने के पहले पोस्टर्स, होर्डिंग सब में उनका और उनके जो हीरो हैं थे उनके चेहरे एक कोट के पीछे छिपा था। तो हम ये गुस्ताखी नहीं करेंगे आज और सीधा आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अनु अग्रवाल, द ओरिजिनल आशिकी गर्ल। हेलो अनु, इट्स वंडरफुल हैविंग यू हियर विद अस। और सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो प्रमोशनल कैंपेन था, ये किसका ब्रेन वेव था? You know, the thing is कि first of all, thank you so much and I'm so happy to be here and thanks to Pink Villa as well and to you. तो कहा जाता है कि किसके पीछे किसका हाथ है, ये बाद में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इमेजिनेशन हर आदमी की जारी रहनी चाहिए और वो इमेजिन करके देखे कि उसको क्या लगता है, किसका हाथ था जी। तो आई थिंक दैट मिस्ट्री इज आई बिलीव इन मिस्ट्रीज अ लॉट। पर ये जब पोस्टर्स आप देखते थे तो कैसा लगता था आपको? फ्रस्ट्रेशन होती थी, थोड़ा सा गुस्सा आता था कि लोग, मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और लोगों को अभी तक मेरा चेहरा नहीं दिखाई दिया? नहीं, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ। फिल्मों के पोस्टर से ज्यादा मेरा क्लोजअप हर सड़क पे, हर फोटो, सारे यू यूज्ड टू ड्राइव लाइक। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तो एक शूटिंग हम कर रहे थे, आई थिंक वो स्टारडस्ट का कवर था या क्या था, तो उसमें अमिताभ बच्चन भी थे और मैं भी थी। तो वो जो है, मैं टाइम पे पहुंच गई, तो वो थोड़ा लेट आए, 20 मिनट लेट आए होंगे। तो उन्होंने आते ही मुझसे सबसे पहले कहा, आई एम सो सॉरी। और मैं क्या करता, योर फेस वॉज देयर थ्रू आउट on the road and there was a traffic jams. So my big poster of just my face was there and uske upar likha hua tha, this face can stop a crowd. So my face was already known and before that I was a model. Everybody knew me. Frustration, no. I'm not the kind of person jisko I avoid frustrations. Because I feel कि जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छाई है। जी। जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ मॉडल नहीं, सुपर मॉडल थे, और वो ज़माना एक था जब ऐसा कहा जाता था कि मॉडल्स एक्ट्रेस नहीं बन सकते हैं, वो एक क्लोथ्स हॉर्स है या एक ट्री है, वुडन है, एक्सप्रेशंस उनका वुडन है। तो जब आप आए ये इंडस्ट्री में, एक तो मॉडल, ऊपर से आपके साथ कोई एंटोराज नहीं होती थी, आपका फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर्स, कोई नहीं रहते थे सेट पे, आप रहते भी थी अकेली। तो ये मतलब इंडस्ट्री के लिए कल्चर शॉक था। तो किस तरह का रिएक्शन? शॉक इज राइट। मेरी पर्सनालिटी तो फुल्ली शॉकिंग थी सबके लिए। एंड देन मेरा अंदाज, जी, अकेले चलना, वॉक
fearlessly. जी And then I had a model walk, जी जो कि उस समय नहीं थी बहुत लड़कियां जो कि बिल्कुल। around the especially film sets में. जी पर उसकी बात एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज मॉडलिंग की वजह से मुझे पिक्चरें मिली, जी क्योंकि महेश भट्ट ने मेरे इंटरव्यूज, आई वॉज द ओनली मॉडल हु वाज एक्चुअली गेटिंग इंटरव्यूड एट दैट टाइम. जी So where I'm talking 80s, late 80s, जी and he read some interviews and he formed a story. ओके तो वो जो मेरा सुपर मॉडल और सब लोग मुझे जानते तो थे, जी and I had become the highest paid model. So वो सबको पता था, the whole industry, everybody knew it. So because of that, कहानी जो अनु का जो किरदार है वो जो जी। बना है वो मेरी कहानी पे बना. अच्छा So I think that's because of that. But you are right. As it is, मेरे को देख के वैसे ही लोग शॉक हो जाते थे. हाँ Because मैं अकेले थी जी और कोई entourage नहीं था, तो मुझसे आके पूछते थे आपकी मम्मी कहाँ है. हाँ जी तो मैं सोचती थी कि रियल आंसर इज वो दिल्ली में है. हाँ तो आई वुड से वो दिल्ली में है. एंड they couldn't believe that I was giving an answer like this so straightforwardly. पर वो था. But the thing is that आशिकी की हमने शूटिंग 3 महीने करी है सिर्फ. ये मेरी कंडीशन थी हाँ हाँ कि फिल्म की शूटिंग 3 या 4 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो मैं फिल्म नहीं करूंगी. क्यों Because I was going back to Paris. I had come from Paris. ओके अच्छा And I had tied up with a modeling agency in Paris, ओके which was for special looks. मेरी looks को special looks कहते थे. जी And the next season was about to start. अच्छा तो महेश भट्ट ने कहा था मैं कंप्लीट कर दूंगा उससे पहले. हाँ हाँ तो खैर इसलिए उस समय डेफिनेटली लोग अजीब तरीके से, तो हीरोइन नहीं दिखती, ये कौन है, जी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मॉडल है जी बट देन आपकी कला जो है ना, हाँ हाँ किसी की भी जब कला होती है ना, वो जब आप में गुण हैं तो निकल के दिखाई सबको पड़ते हैं. आप सेट पे आते हो और जब आप एक्टिंग शुरू करते हो तो सबको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, किस लेवल की आप एक्टिंग कर रहे हो, वो पहले सीन से पता चल जाता. तो आपने कभी एक्टिंग की थी इसके पहले? स्टैंडर्ड 7th में थी तब हमारा एक प्ले होने वाला था स्कूल में, और उसमें इट वाज अ ग्रीक प्ले. अच्छा और उसके अंदर इट वाज 14 पेजेस ऑफ अ मोनोलॉग. अच्छा और उसका कहानी ऐसी थी कि 2 लोग हैं, शुरू होता है वो प्ले, एंड वन गाय Theodorus or some Greek name, that guy asks Philactus or whatever this other guy is a question. What do you think life is? And this guy takes 14 pages to tell him what life is. ओ बाप रे So auditions सब लोगों ने किए and I got selected for that. And it started there. अच्छा So by the time I was in the 8th standard, I went to the principal and I said to her कि एक dramatic society क्यों नहीं खोल लेते स्कूल में. They were said, she just looked at me. Then she said, okay. Then I directed and acted in the 9th grade. अच्छा And then by the time I joined college, the first year of college, again there was a play happening. Again there were auditions. There were 14 boys and 1 girl. पांचवा सवार उस प्ले का नाम था. अच्छा पंकज कपूर डायरेक्टर ISD से आए थे अच्छा अच्छा उस समय डायरेक्ट करने, और मुझे वो लड़की, तो मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स की लड़कियां प्ले करी. उसके अंदर कई छोटी छोटी कहानियां थी और 14 लड़के थे. सो then I was in Kamani Auditorium and I have done so many I have done Kamala Das monologues. अच्छा If you know of the author Kamala Das. of course yes Right? yes So I've done her monologue. So I learned a lot also. My life got shaped as a girl by these kind of characters as well. But on the same hand, I've always been an actor. तो ये जो आशिकी की जो स्टोरी थी वो सिंपल सी स्टोरी थी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल लव स्टोरी विद
a little bit of a twist. तो ये फिल्म अगर आपको आज ऑफर किया जाए तो ये क्या करते आप? That's a weird question. You know why? Because आज my love is with God. मैं अकेली हूँ, right? मैं क्यों अकेली हूँ? मेरे को अकेले होने की कोई जरूरत तो नहीं है, right? I'm not married. I have chosen to be not married, right? क्यों? You must be Exactly, having that's what I'm lots saying. So of that's a long story. admirers. उसके लिए Yeah. एक और interview करना पड़ेगा. But coming back to the question that you asked, you know, so at the end of the day, I think that today's Ashiki should be the people, the young people of today. Okay. Because it's a boy and girl. If you're showing a boy and girl love, then for me, that was the time. It was there. Today, it doesn't appeal to me at all. Ashiki 2 have you seen? I have, yeah, because, yeah. कैसे लगा आपको? Nice. Matlab, you know, I didn't want to like judge it because Ashiki, in a sense, when I signed Ashiki was not a super film. Right. Ashiki was being made by a director who was not a commercial director at that time. Mahesh Bhatt was a art film director. So this was not a film that was slated to be the next big hit commercial film. It was a film that was made with pure love, actually. And it was art. And so the point is that today, when we look back, and at that time, it's a different time. I am different. मेरी दूसरा जीवन स्टार्ट हो गया है यार. तुम लोग की समझ क्यों नहीं पाते हो? This is life too. I'm 26 today. Right. In my life too. Absolutely. That's how my mind works. Yeah. और ये जब आशिकी हुई इतनी बड़ी हिट, आपका लाइफ बिल्कुल बदल गया. लोग फिर भी बातें करते रहे. वो एक ऐसा टाइम था जब लोग जब देखते थे कि एक अकेली लड़की है इंडस्ट्री में, बॉम्बे में रहती है, तो और भी बातें करते थे. कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो सोचते थे कि इसका एडवांटेज लिया जाए. तो आप किस तरह ये मतलब आगे बढ़े, यू नो, विद ऑल दीज? मेरा एक बहुत सिंपल उसूल हमेशा रहा है, मूव ऑन. और लोग क्या सोच रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू बी योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ, to be pure, जो self love की आज बात हो रही है, मैं उस समय कर रही थी. अच्छा. And which was not appreciated really. You're right. It was not appreciated at that time. But ठीक है यार, क्या है? Why? Who's looking for appreciation? If I had been looking for appreciation, I would have married the richest guy, you know, at that time. I was earning more than the boys, but I could have got even a richer guy. But if I had to appeal to the social understandings or even appreciations or even the social dialogue of how a girl should be, I was doing all the wrong things. क्या फर्क पड़ रहा है? उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? आपने इतना बड़ा डिसीजन, आप 18-19 साल की लड़की हैं, आप घर छोड़ दिया आपने कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और आप अकेले रह के स्ट्रगल कर रही हैं. हर दिन स्ट्रगल है, हर मिनट स्ट्रगल है. और जब आशिकी रिलीज हुई तो वो स्ट्रगल 10 टाइम्स बढ़ गया. बिकॉज अब लोग मुझे पहचानने लगे थे. मैं अकेले जाके उस समय MTNL का बिल मैं भरने जाके मैं लाइन में खड़ी हो जाती थी. जब मैं मॉडलिंग भी करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे कोई, आई डोंट हैव एन ईगो दैट गेट्स हर्ट क्योंकि मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ यार. ठीक है, मुझे गर्व होता था कि मैं लड़की होके मैं अपने आप अपना बिल भरने आती हूँ यार. क्या है, क्यों चाहिए कोई और करने के लिए. एंड आफ्टर आशिकी फैंस आ जाते थे, ये लो मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ, लाइन में खड़ा होना इम्पॉसिबल है. फाइनली मुझे भागना पड़ता था वहां से. सो लिविंग बिकेम डिफिकल्ट. आपको मतलब यू वर द हाईएस्ट पेड हीरोइन, यू वर गेटिंग मोर देन द बॉय, जैसे आपने कहा. पर उस समय हीरोइंस और अभी भी हीरोइंस हीरो से कम पैसे मिलते थे. और ऐसा
काफी बार हुआ है कि जितना आपको प्रॉमिस किया जाता है वो भी नहीं मिलता है, नॉट जस्ट हीरोइंस बट वो जो टेक्नीशियंस और जो आसपास के लोग हैं मुझे आज तक आशिकी के पूरे पैसे नहीं मिले. नहीं मिले. I was only paid 60% of the full money. They still owe me 40%. तो आपने पूछा कभी? No, it's okay. It's ठीक है okay. यार. I और mean, I आपने ऐसा- earned a lot. I mean, I earned a lot in so many modeling. Actually, I learned much. I earned much more in modeling. Yes. I became a brand ambassador. By the way, I'm one of India's first actress brand ambassadors, जी or even actor. जी उसमें एक्टर भी नहीं था ब्रांड एम्बेसडर. जी उसमें ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ क्रिकेट के हीरो होते थे, जी लाइक सुनील गावस्कर एंड ऑल. जी. सो आई एम सो ठीक है यार, क्या है, मेरी गिफ्ट है उनको. और कभी ऐसा आपने कभी सेट पे ऐसा देखा है कि किसी को कोई आए पैसे के लिए और उनके साथ कुछ मतलब बदतमीजी या कुछ हो रहा है? It was a dirty business. I don't know Exactly. how dirty it is today. I'm not in it. अब मैं फिल्म करूंगी तो फिर आप मेरे साथ एक और इंटरव्यू करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी अब कितना डर्टी है. जी. और उस समय के बारे में बताइए. And how it's हाँ. compared, Yes. it's compared to that time. जी. And at that time, it was it was all under the table deals. It was ruled by people like Dawood Ibrahim. All the money that was coming into the film industry it came from the underworld. So, वो सारा scenario एकदम अलग था. Yeah, and for me to be alone and walking exactly. around the place and Yeah. this, that, and living alone, and I had fans like, standing under my building. Luckily, the building I was in was an MLA MP building. Yes. So we had police protection. We had like guards coming with guns, standing with guns, 8 to 10 of them. So they used to not let people enter the gate. But it was madness. I had people were flying from different countries to come and just see my building. You know how it is with Shah Rukh Khan today. Shah Rukh is my neighbor. I see that, and I said, this is how it used to happen. I ran away from it. Yeah. Exactly. Yeah. Yoga helped me run away. Yeah. So, your career is like a textbook, it should be, because at a time जब लोग हीरोइन बनते थे तो हीरोइन बन के ही रहते थे जब तक कैरेक्टर रोल्स नहीं होता था, मदर रोल्स नहीं आते थे. तो और अब आप गए हीरोइन बने, बड़े हीरोइन बने, फिर जाके आप मणिरत्नम के साथ एक गाना, उस समय आइटम सॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और आपने ये गाना किया जो अभी तक फेमस है. फिर आप आए वापस और आके सावन कुमार तक के साथ खलनायिका की. तो what was working in that mind? No, it was very simple. So after Ashiki, what happened? There were tons and tons of people standing outside with briefcases of cash मेरे को sign करने के लिए. And I saw that and I was like, oh God, what should I do, So I said, okay, ठीक है. How are you going to deal with it? Make a list. What is the list you're going to make? What are the questions you're going to put in front of these guys? So this guy is standing there with his briefs. First of all, you say no to the money, tell him to shut the brief. बंद करिए, आप पहले ये बताइए मुझे, आपकी स्क्रिप्ट तैयार है? नहीं है तैयार, सॉरी, बाय. इस तरीके से मैंने लोग निकाले हैं. इस तरीके की मेरी लिस्ट थी कि स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए. The entire film should be a strong film, which is coming out of the strong story, which is bringing something new as an art to the public. वो नहीं होता था most of the time. Third, इस तरीके से मेरी लिस्ट होती थी चीजों की, and which helped me like cater. So I could sign only maybe, let's say, 1 film out of 100. Literally उस ratio में, या उससे ज़्यादा, maybe 1 out of I don't know, 600 or 800. I was flooded. I mean, Anu Agarwal Ashiki was Anu Agarwal. I was there on the cover of all magazines. Anu. And then, of course, modeling was happening. So, it was madness. तो ये जरा मणिरत्नम के साथ काम करने में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा बताइए. Mani was amazing. Mani-Ratnam, actually, I got a call one day saying that I'm calling from Chennai.
from Mani Ratnam's office, and that was the producer. Mhm. And Mani Ratnam wants to do a film with you. Mm. And I was like up the roof, Mm. like, wow. Mm. So, not because of anything else, but because in the advertising business, लोग कहते थे यार उसके 2 पैर हैं कि 4, वो किस तरीके की पिक्चर है बनाते हैं, how he shoots, Mm. like just the whole art, the technique Mm. which he used and how his mind worked. Mm. So people were in awe of him. So yeah, I said yes. And of course, I mean, it was a brilliant experience. Mhm. I would say actually that each film that I've done, it just added so much to my growth curve, you know. Hmm. And they were all different directors. Mm. So if you start, my first film is Mahesh Bhatt. So he's a personality in his own right. Mm. And I learned so much, and a filmmaker in his own right, Mm. director. I learned so much, and I have had close relationships with all my directors. Mm. And there's no hanky panky ki Mm. वो सब कि ये बेड हो गया और ये क्या होता है, Mm. casting couch, ये सब नहीं हुआ है मेरे साथ. Mm. Because I would have just said, my agent 2 years down the line was saying, laughing and saying, Anu has got her own casting couch. Director आता है कहती है लिज. Yeah, and he's a joke. But anyway, casting couch होती थी उस समय. no casting couch थी यार, क्या कहा नहीं है casting couch. अच्छा. बैंक में casting couch नहीं है. Hmm. क्या बात कर रहे हो आप यार? जरूर. Why are we so? Why are we pretending? Hmm. Right? Hmm. Corporate houses में casting couch नहीं होती. Hmm. What are you talking? Everywhere there's casting couch. Mhm. So since life has started, Hmm. there's man and there's woman. And there are 2 energies. There's male energy, there's female energy. And their union is something that everybody wants. जी. That's what Earth is. That's the entire history of Earth. So what is कि ऐसा है, ये बुरा है, कि क्या है यार, क्या हो रहा है? तो At the end of the day, if हाँ. you make it, हाँ. क्या बुरा है? When you don't use your potential. I think that is बुरा. Hmm. I think क्या बुरा है? Stress. Why are you getting stressed out? Hmm. Do activities where you can release the stress. Hmm. Why are you sitting 18 hours a day working with and stressed out and the relationship is stressed out? That's what I'm seeing all around the world. Today, I live, मैं योगा यूनिवर्सिटी में 12 साल रही हूँ, जिसमें से कि 6 साल में सन्यासी थी, जिसमें मैंने अपने सर मुंडाए हुए थे और मेरे पास सिर्फ एक बैग था, उसमें 2 कपड़े थे जो मैं खुद धोती थी सुबह उठ के 4 बजे. Hmm. राइट. एंड एक चप्पल थी. मैंने ना लिपस्टिक, तो मैंने जब 12 साल बाद आके लिपस्टिक देखते मुझे लगा, मैंने उसको लिप्स पे लगाया तो मैंने कहा गॉड दिस इज सो टॉक्सिक. ओह गॉड दिस इज सो टॉक्सिक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोग प्रिटेंड्स में क्यों रह रहे हैं यार? कौन सा प्रिटेंड कर रहे हैं यार? व्हाई? तो What is the casting? What is the big deal being made about अनु, casting आप couch? इतने मतलब इतने सक्सेसफुल थे, आपके पास रोल्स आ रही थी, अच्छे रोल्स, तो आप चले क्यों गए? क्योंकि मैंने खत्म कर दिए सारे टॉप डायरेक्टर्स. आई वर्कड विद मनी. आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 1990 आई वर्कड विद महेश भट्ट. 91 I have signed Rakesh Roshan, राइट, किंग अंकल. King Uncle, which was a completely different role. I worked for roles. I did not work for fame. I did not work to get money. नहीं तो मैंने सब साइन कर ली होती पिक्चरें. I'm an actor first. And if I was here, I wanted to play different roles. Different hairstyle, different clothes, different emotion. For me, that's what was interesting. Right? जी. So, first film, Ashiki. उसके बाद मैंने सारी मना कर दी. सारी लव स्टोरीज आ रही थी. अच्छा. I did not sign any other love story. Did you see me any other love story? You didn't, right? Yeah. Second film, King Uncle. किंग अंकल क्यों सर? Rani हाँ. is Goa ki and she's a silly girl. I mean, I really wanted to play that. It was so unlike me. That girl, you know, she's like, she's so, and you know, she's, you know, I mean, I'm not all like that. It was a great role to play. And of course, working with Rakesh Roshan was an experience. My third film is Khalnaika. Yes. Khalnaika is a woman protagonist who works to kill. Yes. She's a mad woman. Right? And she was 10 years older than the girl of Ashiki.
So I'm wearing a sari all Hmm. throughout with my hair tied up, right? That was a role. And then around the same time, I signed Mani Ratnam. In Mani Ratnam's film, I was an underworld queen. मेरे पास हीरो थे ही नहीं किसी फिल्म में. मेरे को सारे सोलो रोल्स मिले हैं, जी. अपने आप आए हैं ये लोग. हाँ. मैं किसी के पास गई नहीं हूँ. जी. ना मेरे माँ बाप इसमें थे, ना मेरा भाई था, ना मेरी बहन थी, ना मेरा कजन था, ना मेरा कोई नहीं था यहाँ. मैं अकेली थी. बिल्कुल अकेली. मैं रात को घर जाती थी, मैं अकेली थी घर पे. मुझे लगता था कि कहीं बाहर लोग खड़े हैं, कोई घर पे शायद आ ना जाए. राइट? आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट. आई नो व्हाट इट्स लाइक टू लिव एज अ गर्ल अलोन. एंड इट्स नॉट इजी. एंड स्पेशली 30 साल पहले इट वाज एब्सोल्युटली नॉट इजी. बिल्कुल इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. जी. It was not accepted at all. It's not like today where parents are telling their girls, ठीक है तुमको अकेले रहना है तो रहो. How many girls are living alone? And it's accepted. At that time, तुम्हारा दिमाग खराब है. क्यों? बाप क्या करता है इसका? मेरे को कितने लोगों ने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद कर दिए. मुझे पीजी नहीं मिलता था. मुझे पेइंग गेस्ट, जब मैं मॉडलिंग कर रही थी उसके टाइम पे, मैं जब पेइंग गेस्ट ढूंढती थी तो मैं मेरे पापा कहाँ हैं तुम्हारे? तो क्योंकि मेरी एज भी 19-20 साल, राइट? जी. पापा कहाँ? पापा दिल्ली में है. क्या करती हुई? मॉडलिंग. The job was bad and a girl alone was bad. Nobody could trust a girl alone. क्योंकि क्या ये पागल है क्या? क्यों अकेली है ये? क्या प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद then they would imagine, then there were stories that started coming out that इसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, and this, that and the other. So what I'm trying to say is that all along the way, there's only one thing that I have always held on to, and I would like for everyone who's alone or everyone who has difficult times, because everyone goes through it, to know that just believe in yourself and just believe there is a power that is protecting you. You could worship whether it's Muhammad or whether it's Jesus Christ or whether it's Krishna or whether it's Rama or whether it's Shiva or whether it's whoever. At the end of the day, it's a force, right? जी. You have it inside you. That's what I'm teaching. What am I doing with my foundation today? I have found that force. How did I find out that force? ठीक है, मैंने योग की पढ़ाई करी, ये करी, वो करी, ये सब किया मैंने, right? I knew a lot. I became a topper. ये कर लिया, ये कर लिया सब कुछ. उसके बाद भी मेरा पूरा शरीर टूटना था. जी बिल्कुल. मेरा एक मेरी यहाँ हर मेरी शरीर में 99, right? मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरे यहाँ. मेरे शक्ल पे सिर्फ यहाँ से स्कल फ्रैक्चर which bled. I had a brain bleed and my hippocampus was damaged. I had absolute cognitive loss, which was also memory loss, but it was every loss. I had no communication. I had no language. I did not know my parents. I did not know me. I did not know Anu. Everything. Anu, who is Anu? हाँ. Who is Anu? लोग कहते थे अनु. जब मुझे पीछे से कोई अनु कहता था, मैं दूसरी तरफ देखती थी. मुझे पता ही नहीं था. So the thing is that that's when I became close to the super force inside me, which is full of love and compassion. And that's where I got to know that this is what it is. That's what you are. That's what we all are. And I need to tell this to people. So, एक बहुत interesting saying is Zen में. Zen कहता है कि when you realize, then you know. The only thing to do now is to tell the other. That's what I'm doing now. तो ये एक्सीडेंट 1999 में हुआ था ना, राइट? हाउ डिड इट हैपन? आप वापस आ रहे थे बॉम्बे या कहीं जा रहे थे? हमें योगा स्कूल से वापस आई हुई थी. अच्छा. उन दिनों. And I was debating because वहाँ स्वामी जी ने कहा मुझसे कि तुम में तो संन्यास की प्रवृत्ति है. मैंने कहा वो कौन सी प्रवृत्ति होती है भाई? You have no attachment. And I said, no, that's not true. I'm even attached to my coffee in the morning.
Even that's attachment. What do you mean I have no attachment? He says, no, there are only, in every 10,000 people in the world who are born, there's only one person with sannyasi mindset. It is something you're born with. And he said, you have that. And I said, ठीक है यार, all this compliment तो ठीक है, अच्छा है, thank you very much, पर सर मुड़ाना, सर क्यों मुड़ाऊंगी, मेरे इतने अच्छे बाल, अन्नूताज, all the ads I've done for my hair and this, that and the other, why would I do that? Anyway, so I said no, but I started thinking. And I came back and I was contemplating. ये तब एक्ट्रेस थी आप? 98 की बात है ये. And because I went there I came baback in 99 actually, and then beginning I came back 97 I went there. तो मैं वहाँ 1.5 साल रही हूँ. और जब मैं आई हूँ तो मतलब I think you know what, awakening थी ये. You know, because मैंने इतनी सारी चीजें देख ली थी और मैंने ये दुविधा भी दिमाग में चालू हो गई थी कि मैं अब फिल्में नहीं करना चाहती, करनी तो मैंने छोड़ ही दी थी पहले. But now I want to delve deeper because I still haven't found that superpower. मैंने सब पढ़ तो लिया है, सब मैंने ये सब देख लिया, make friends with yourself, yoga says this, ये सब मैंने सब पंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, सब मैंने कर लिया है ये सब. पर फिर भी अभी भी मेरे को I still have confusions. I still feel कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए, पिक्चर है, साइन करो यार. And मुझे नहीं करनी है, मैं क्या करूं? What to do? It was creating a lot of mental stress. And I want to teach them yoga. And मैं यही सोच रही थी, उस समय accident हो गया. So the thing is कि मुझे लगता है कि everything else attached to it is not important. Why everything is important, but why it's not important is because there's something even more important. And that more important has to do with my life journey. And I had to, मेरा शरीर टूटना जरूरी था, क्योंकि मैं शरीर में मतलब I was Anu Agarwal, right? Anu Agarwal was a sex bomb. अंदर क्या होता है, क्या हो रहा था जरा? वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अंदर की जो यात्रा मेरी अंदर की चालू हुई, उसमें करते करते मैं ये सुपर सेल्फ पे पहुंच गई. That superpower that I wanted, I was still questioning it. Even after all that study, after all that, I was still questioning it. And that, boom, समझ में आ गया कि we are love, we are one. Why are you fighting with each other? In fact, very interesting. उसी समय मैंने सेलिना विलियम्स का एक कोट पढ़ा था. उसने कहा कि किसी ने कि what is it like to be in outer space? And she said that you look down on the world from above and you wonder why anybody is fighting, because it's all so beautiful. And she said that people will stop fighting. All the wars will stop if people see from above. And that's what happens. तो आप भी उसी लेवल पे मतलब हाई प्लेन पे in a different way, but yes. So for the world आप कोमा में थी, पर आप you were looking at the world. All of this was happening, yeah. तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब वंस जब आप हॉस्पिटल से निकली तो क्या हुआ उसके बाद? मुझे ध्यान है कि मुझे तो of course my body couldn't move, तो मुझे व्हील चेयर पे, मतलब 4 लोगों ने शरीर मेरा उठा के व्हील चेयर पे हॉस्पिटल में, आई वाज इन ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल, तो वो रखा मुझे शरीर के साथ. शरीर वो समथिंग एल्स, आई वाज समवेयर एल्स. मैं आत्मन में थी ना. एंड आफ्टर दैट माय पेरेंट्स वर ट्राइंग टू टेक मी टू दिल्ली, और obviously flight was impossible. I mean, how would I even walk to a flight? Even if they took me on a wheelchair, they were scared ki, and I had no idea. I had no idea that Anu Agarwal had traveled. She was a traveler. All through the modeling time, Paris, London, New York. I had no recollection at all. कुछ भूल गए थे. I did not even know what Paris was, by the way.
I was lying on bed. One of my aunts came and she said, I'm back from America. And I looked at her and I was thinking, what is it? अमेरिका कहाँ है? कहाँ नहीं, यही नहीं पता कि प्लेस अच्छा, क्या होता है, ओह ओके, यही नहीं पता कि प्लेस क्या है. And at that time only there was a tree outside the house, you know. And lying on, I was bedridden for months. And lying there, I could just see a hollow in the middle of the tree trunk, which was full of light. And I used to just keep looking at it. I was that. We are just actually just pure light, each one of you, each one of us. We just don't know it. That's why we get stuck in things outside. Ye ho gaya, casting couch. That happened. You know what I'm saying? जी, I mean, we don't see the beauty that is there inside us, you know, and outside. Everybody is beautiful. आपने एक किताब भी लिखी है आपके जर्नी के बारे में. So yeah, I'm writing. So पहले मैंने memoir लिखा था. जी. And अभी लिख रहे हैं कुछ? हाँ, so नहीं, उसका मैं updated version लेके आ रही हूँ. So that I'm working on. अच्छा. But before that, I already completed. Because people keep saying कि you're a miracle, जैसे doctors कहते हैं miracle, कैसे आप ठीक कैसे हुई? जी. मैंने कहा कि why not write it in a book and tell everyone हाँ. कि these are the steps जी. I have taken, and also give some hints उनको कि आप भी ये कर सकते हैं. So I have finished that book, yeah. Okay. And it's in the process right now. So tell us, एक चीज आप बताएं कि अगर कोई somebody किसी के पास बहुत serious accident में कोई हो तो कैसे strength उसमें वो courage वो strength to come back to life, what is one thing that you have learned through your journey? Believe that you will. That's about it. You need to have that belief. तो कभी ये जर्नी में कभी आपका वो जो विश्वास था आप में वो कभी चला मतलब टूट गया था? You know, and the other thing is positivity. जी. Doctor in Beach Candy told me this later when they saw me like cat walking after 2 years. They had told my parents she will die, and if she doesn't die, she will be a vegetable case and die in 2-3 years. So this is what they told my parents, who started crying and all that, of course, at that time. So there was no hope. I was already kind of dead. But 2 years later, I came to Mumbai and I flew to Mumbai. And I went to meet the doctors. They couldn't believe. They just sprung up their chairs. They say, "Ye kya ho gaya?" They were joyful. I mean, they were happy that I had. So one of them said to me very clearly later on, because then I went to the yoga place, no? जी. And then my rest of the healing was happening there. So he said, you know, Anu, I'll tell you one thing. He's a cardiologist. He says, मेरे पास इतने लोग रोज आते हैं. And he says कि वो हर जना जो आता है वो complain करता है. अरे ये हो गया, मेरे घुटने में दर्द है, और वो the whole life पूरा focus वो वहीं पे हो जाता है. जो एक छोटी सी कहीं चोट लगी हुई है. Housewives, pimple हो गया. They've come to, like, he says that the people come. He says that at the end of the day, they have made that one problem everything. He says, you made all the problems positively one solution. I'm going to heal. मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालाइज हो गया, ये हो गया, गला नहीं काम करता. My collarbone was here because I had a fracture, multiple fracture here. One collarbone was flat, one was here. Everything. Body was like out of shape completely. I couldn't even see. Like my eyes only wouldn't see like this. You know, एक आँख यहाँ देखती थी, एक आँख यहाँ देखती थी. I mean, here you couldn't see, but from inside me, I was like so spread out to the universe that I was not a normal human being, you know. And he said,
Anu, what do you? It's your positivity. You never complain. Not even. तुम्हारी कितनी even everything a doctor can mend. You had that problem. He says all of us doctors got busy the minute you came to, because you're Anu Agarwal now, you can't die. जी And you were you had lost your breath. जी If she dies, Anu Agarwal dies in Vish Candy Hospital, head news ban jayegi. जी बिल्कुल. He says all the top doctors cancelled their flights. Somebody was flying to America, somebody was flying to London in the morning, because I reached there at 4 or 5 in the morning. Okay. सबको कहा गया कि आ जाओ, इसको ठीक करना है. And says when we came, we had to pump breath. You had lost breath. So you're going. But जो हमको दवाई चाहिए थी वो मिल गई. कितनी दफा पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि दवाई हमको नहीं मिलती है उस समय. वो उस समय टच एंड गो होता है. उस सेकंड में हमको वो दवाई चाहिए. एंड वो नहीं मिलती है. He says तुम्हारी तो जो दवाई चाहिए थी फटाक सामने मिल गई रखी हुई. Like you had to heal. जी. And he says it's your positivity, and you are such an inspiration. You have to get out, tell the people about it, write a book. This he told me in मैं जब वापस आई हूँ the second time. 2001 की बात बता रही हूँ आपको मैं. 2001. 99 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये 2001 की बात है. So the thing is that And 2001 में आप आके your you walked the ramp. They're still asking me to walk the ramp. I'll do it probably now. अच्छा. तो अनु आप बताइए कि कुछ काफी साल तक आप ये इंडस्ट्री से बाहर रहे, दूर रहे, अब वापस आ गए हैं. क्या चेंजेस, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि जो रोल्स आपको उस समय नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप चले गए थे, वो रोल्स आज आपको मिलेंगे? क्योंकि आज OTT और बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं. पीपल आर लुकिंग एट स्टोरीज रादर देन स्टार्स. तो अभी मतलब द प्रेजेंट, हाउ इज इट नाउ? So the thing is कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि I have so much gratitude, क्योंकि मुझे अपनी सपनों से भी ज्यादा अच्छे रोल मिले थे जी जो मैंने करे. जी. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये सब लोगों को, सब दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अंडरस्टैंड करें कि अगर आप छोड़ते हैं तो आप नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से नहीं छोड़ते. मैंने नहीं छोड़ा है उस तरीके से. मैंने पॉजिटिव अचीवमेंट के से छोड़ा है, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया था तब तक. और मुझे कोई उस समय मुझे ये लग रहा था कि और मेरी पर्सनल ग्रोथ इससे भी बड़ी हो. और आज की सीन मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. ऐसा सीन मुझे 10 साल पहले नहीं इंटरेस्टिंग लगा, 5 साल पहले भी नहीं लगा. पर हाँ, वो मेरी ग्रोथ वो अलग बात है. पर ऑल्सो जो सिनारियो चेंज हो रहा है पूरा बॉलीवुड का और पूरी वर्ल्ड का. साउथ फिल्म्स कितनी बड़ी हो गई हैं अब. और what I'm liking is that the audience has become discerning. The audience is clearly coming and saying, F it. नहीं देखना है मुझे ये. स्टार के नाम से नहीं चलेगी पिक्चर. मुझे कुछ दम दिखाओ उसके अंदर. Show me some meat. And I think that that's a very interesting time, because it makes me feel कि I want to do something. And also on the other hand, times the thinking is different. People are making, especially OTT, they are coming and they're making relevant topics which are trending in today's society. I find that very inspiring.
तो इसलिए मुझे ये समय सही लगता है। आपने कुछ ऐसा हाल ही में कोई शो देखी या कोई फिल्म देखी जो आपको बहुत इम्प्रेस किया? मैं मतलब कि सबसे पहले तो आई टेल यू वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म दैट रियली इम्प्रेस मी वाज RRR. जी। I was blown away by that film. I actually watched the whole film. and and then I mean, there's something I even liked Animal. जी। I liked it. Hmm. I liked, so there are different kinds of films that are being made, and लोग जो हैं उनकी सोच अलग हो गई है. ऑडियंस और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी जल्दी हम कोई भी फिल्म मेकर्स ऑडियंस की पकड़ समझें उतना हम सब लोगों के लिए अच्छा है. एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम. OTT में कुछ शोज ऐसे हैं जो आपको अगर आपके पास आते हो तो आप हाँ कर देते? आई डोंट थिंक लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली. नहीं, मैं ये नहीं सोचती कि वो मेरे पास आ जाता तो मैं ये कर लेती. नो, आई डोंट थिंक लाइक दैट. आई थिंक मेरे लिए रोल्स बने हैं. I am a character in myself. जी. I had, I've had directors from Hollywood say that you are a real life character. I mean, who is like, I mean, I'll be wearing, Western things with Indian things, and I've always been like this. Yes. So nobody defines me. Nobody tells me what to do. I have been my own boss. And I think usse zyada bada, you can't have anything bigger to be grateful कि तुम वो कर पाए. नहीं तो हम सब किसी ना कहीं adjustments कर रहे हैं. I have made no adjustments. I just walked out. ठीक है, कुछ नहीं चली जाऊंगी. One of my fights with my boyfriend, one of my first boyfriend. अच्छा. उस समय I had not even started earning. I mean, I had a job in research bureau. Okay. So, I'm a social worker and I'm a counselor, and तो मेरा काम दूसरी तरीके के थे. Blind school के साथ काम था. तो वो मतलब कि they were not money oriented, money making machine kind of work. But I loved that. So anyway, so one evening, he said something. And I had just come to Mumbai. बॉम्बे का तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नेपेंसी रोड है, तो ये चर्च गेट कहाँ पे इस तरफ है, कि ये बांद्रा इस तरफ है. कुछ आइडिया नहीं था. रात को 11 या 11:30 बजे होंगे. I said, ठीक है, you want? I just picked up my bag, walked out of his house. Walked out of the house? Walked out of his house. करते करते पास का जो स्टेशन था, because somebody had taken me. करते करते I walked to the station. It was a long walk. 20-25 मिनट का walk था. जी. बैग के साथ in rage, just walked to the station. वहां जाके बैठी, and now I'm in the station. चर्च गेट का स्टेशन आ गया. वहां तो कोई नहीं है. मैं वहां बेंच पे बैठी हुई. Suddenly it struck me, the guys around, they're looking at me. Suddenly it struck me, यार, तो where the hell are you? और ये रात के टाइम है. बाप रे. And I'm telling you, this is 35 years ago. जी. And I said, look, I mean, what if you get raped? Yeah. So I said, okay. Devi in me is going to arise. मैं जो खड़ी हो गई. And I just stood like this. Didn't look at anybody. But इधर देखा, उधर देखा. That don't you dare come near me. And nobody did. So I think that the power a woman has, I think that's one of the things to all the young girls and everything today I want to bring. And that's what, again, the foundation, the woman empowerment that we are doing. उसमें क्या है? यही है कि how you realize your power. Why are you going on complaining about guys? ये नहीं मिला, वो ठीक नहीं था, वो हो गया, ये हो गया, Stop complaining and blaming. Stop living your true self, and you are power. Today, Anu, अगर जब कोई यंग लड़की आए आपके पास, आपके फाउंडेशन, तो आप
उसे मेन क्या मतलब क्या सिखाते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? मैं या सबसे कुछ पहले है? कहती हूँ, मैं कहने की जरूरत ही नहीं है। जी। मैं एडवाइस में आई डू नॉट गिव एडवाइस थ्रू टॉक, हम्म, क्यों टॉक से क्या होने वाला है किसी का? हम्म, हु इज गोइंग टू फॉलो द एडवाइस? कोई सुन भी लेता है तो हम्म, I have made a structure which I teach, I myself teach, Hmm. which is based, I'm a naturopathy doctor, अच्छा, which is based on yoga, mindfulness, on the cognitive abilities of a person, the physical fitness, firmness, इन सब चीजों के का जोड़ मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 बनाया हुआ है. जी, And this is to awaken and plant positive affirmations in the person's mind. क्योंकि हमारे दिमाग में इतना कूड़ा भरा हुआ है. वो कूड़ा कहाँ से आता है? The media that we see, the everyday news, the everyday life is full of stress. जी, So we need, but we already have. It's not like हम कोई बाहर की वस्तु कोई डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है. We already have positive. We are already positive beings. Why don't we get to that level? And we can. I have practices, and that's what I teach. And girls start smiling. I have orphan girls I'm teaching, and you should have photos of all of them. And I've been posting them. And then वो मैं post करते करते मुझे तो that's why I was called in 2014. I was called from Yoga Research Association in Texas. okay. So they asked me to come and do a CIC, come and give a talk, because they were so impressed with my work with the slum children. And I was one of the 5 people. They were having 25 years. I was amazed कि वहाँ पे they're doing research on yoga in America. जी, ये इंडिया को क्या हो गया यार? यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि research yoga की research. Who's going to? I'm talking 10 years ago. Not even many people were talking about yoga as they are today, yeah. right? And so anyway, they called me. So I went and gave a talk and everything. And they were like standing ovation. I mean, people were so, they felt so much. It's amazing how much the foreigners feel for our slumdog millionaire types, So yeah, so I've been doing it. This is what I've been doing. This is all I've been doing. And this was very consciously not public. No press was ever invited. I was not available for any talks, any interviews, nothing. I was completely in this. मुझे इसमें बढ़ना था, इसमें और मुझे जो है, to grow in this entire thing. And so then the next year, I was invited by in this the Congress of Naturopathic Medicine in Paris. Okay. And then to give a talk about mental health and mindfulness. This was in 2017. So I've just been giving talks 15, 16, 17, 18, 19 till COVID happened. And what pandemic में आपका life कैसे रहा? Because then I started creating awareness. So my foundation started creating awareness in people about what exactly was COVID, how the breathing changed, how the respiratory problems arise, and how to avoid them, how to protect oneself. So we started like talks, we started like, online sessions for this. Again, this was not, I was like, please, no advertising. I don't want people to know I'm doing this. मुझे किसी का, I'm not looking for people to say, wow, no, please, no, leave me alone, yeah. Let me just do my work. So yeah, it's been great. It's been a wonderful journey. And I think that at the end of the day, if you've lived truthfully, is the best life you can ever live. It's not a question of how much money you have. Money comes and goes. जब आप बाहर विदेश में जाते थे तो किसी ने आपसे कहा कि आपकी लाइफ के ऊपर कुछ डॉक्यू ड्रामा या डॉक्यू सीरीज या कोई फिल्म बनाई जाए? या लॉट्स, यहाँ पे भी वहाँ पे भी सब जगह. तो आपने किसी को? नहीं, because it's my life ना, then I have to. क्योंकि आपकी तो किताब भी निकली है. तो है बहुत. तो किताब के ऊपर बनेगा, definitely बनेगा. And I'm still in talks. वो चलते जा रहे हैं talks.
offers idhar se aaye, but I'm still looking at it and still penning it down. Okay. So I've been actually studying. I studied how to write script. अच्छा. So I'm reading whenever I have time because I have all these like hobbies I do. That's one of the hobbies these days. And I want to write a script on it myself. Okay. Because I'm a writer. I write. I've just finished one book and I'm writing my second book. Right. So, yeah. और अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, अपार्ट फ्रॉम योगा, कुछ और ऐसा कोई पैशन है आपका जो Speaking. Public speaking. They call it motivational speaking. Right. But I mean, I don't think I think it's motivational, inspirational, sensational, what is it? So many, all, to it. And, so I've been giving lots of talks, IITs all over India have been inviting me in the last 10 years. That's another thing that I've been doing. I've been giving TED Talks. TED invited me when I first wrote my book, to come and, talk of my story. And so that's another big passion. Then now they've invited me to Mauritius. By the way, Mauritius, after Ashiki, is my first foreign award I got. अच्छा. by in Mauritius. Yeah. So I said, wow, it'll be great. Now I'll come and teach yoga and talk and give you a talk. And Life has moved. that's a big, that's like a life coming a full circle. Full circle, yes. ऐसा मतलब आप योगा रिट्रीट में रहे हैं तो गार्डनिंग, कुकिंग, ऐसा कुछ पैशंस है? I love to cook. Are you अच्छा. crazy? अच्छा. Oh my God, food. Ooh. So it's so my family, my parents and my grandparents and food, they were all vegetarian. अच्छा. Yeah, all vegetarian. But food is so important. And food and nuts and fruit and, all of that sort of thing. Anyway, so so when I started to travel as a model, हर जगह जाके मैं वहाँ के मसाले समय इंडिया में नहीं मिलते थे. अच्छा. तो मैं जब थाईलैंड गई 1992 में, in India, of course, foreign goods were not available. तो मैं वहाँ से जो है, I got all of the, Thai masalas, the curries and everything. 6 महीने मैंने Thai cooking करी घर पे. अच्छा. Then when I was in Paris, of course, Paris then vegetarian. Yeah. What do you mean? You eat fish, right? Yeah, are you crazy? So I only ate mushrooms there, but I loved, a basil sauce that they used to make. Okay. So it was with basil and garlic and olive oil. Just so delicious. And they used to get fresh basils. Then I found places here where you could get fresh, some of the fresh. इतनी सारी उस समय available नहीं थी यहाँ India में. So then I used to make the sauce at home and so I'm like, I love cooking. And then, by the way, फिर क्या हुआ? Accident के बाद मैंने study शुरू करी cooking is खाने के ऊपर, because I couldn't eat most of the things. I came across raw food diet. अच्छा. So I said, ये क्या चीज़ है? So उसमें, and for healing, then I started to make, because healing was my first priority then. So it wasn't taste, it was health. और उसके पे मैंने research किया. So I'm writing, oh God, I wish I had more time. There's a book called... तो ये raw food diet, इसका मतलब क्या होता है? It's basically uncooked food. अच्छा. So raw food में, they have to, I was like, how can you eat? You can't eat one, kacha bangan, yaar. Like, what do you mean by raw food? So what they do is that they also, of course, then you experiment and, you make, if it's raw food, basically the funda is that there's zero oil, there's zero masala. Achha. And that when you cut these out, then what are you left with? Now, of course. So I would boil it in water and then add some herbs to it. Achha. So, so you eat like food, and then of course there is, just restrictions on what all you don't eat and can eat and cannot eat. I have in my family, my mother's grandmother only ate 3 vegetables in her entire life. 3, सिर्फ 3? Only 3. कौन सी 3?
So I don't know which three. I have not asked. अच्छा I was so shocked just to hear that there were only वही I think they were they didn't eat like under the earth Yeah. wale grown हाँ and तो I don't know what. आलू और So yeah, प्याज, so yeah. I think I will definitely write a book, a cookbook someday. cookbook. Someday. ओके वंडरफुल और उसके अब अगर आपको रिटर्न करनी है ऑन स्क्रीन तो व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑफर्स जो आपको मिल रहे हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ roles or characters So that you you know, are it's looking really interesting. Hmm. You are asking me that, and it's interesting for me because maybe मेरा भी ये question था कि Hmm. कैसे लोग आएंगे exactly जी कैसा होगा. But anyway, I said I don't want to ask any question. Hmm. जो होगा वो अच्छा होगा. Yeah, that's my funda in life. अच्छा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है. very wonderful Which keeps you laughing and Yeah, smiling. You yeah. know, I mean, the kind of like the directors who you know I would like to work with as well. Hmm. So when they come in, they're coming up with woman-centric roles, which is fantastic. तो आप किसी से बात Just कर रहे हैं fantastic. बात चालू बात चालू है, but you know, I'm in no hurry. obviously हाँ You know, I'm like, ठीक है यार, मतलब should fit properly. Only then, otherwise, we don't want to do anything halfway. जी I don't want to do that. I've never done that. तो वंडरफुल आई थिंक बिफोर एवरीथिंग एल्स आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए बिकॉज आई थिंक Definitely. दैट हैज I'm all all the drama and everything yeah, I'm all for you it. know so Banegi, Banegi. because we are on it, and you know, inshallah. so wonderful talking to you Thank you so so much. thank you